श्री वशिष्ठ नारायण सिंह जी, धन्यवाद। मैं देश के एक अत्यंत महत्वपूर्ण महकमे के बजट पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, जब कोई भी बजट प्रस्तुत किया जाएगा तो उसके मापने के कुछ मीजरिंग रॉड्स होंगे, उसके मूल्यांकन के कुछ तौर तरीके होंगे कि बजट किस रूप में पेश किया गया है और यह बजट रेलवे के लिए किस रूप में भविष्य में खड़ा होने वाला है। तो पहले तो मैं प्रश्न उठाऊंगा, इस बजट के साथ अन्याय नहीं किया गया, क्योंकि पार्लियामेंट्री जो परंपरा है, पार्लियामेंट्री जो मर्यादा है, पार्लियामेंट्री जो मूल्य हैं, पार्लियामेंट्री जो मान्यताएं हैं, इस बजट के प्रस्तुत करने के पहले इसका ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि पार्लियामेंट का कुछ ही दिन बचे हैं और उसके बाद क्या नेसेसिटी हो गई, क्या आवश्यकता हो गई, क्या मजबूरी हो गई। आकाश पृथ्वी पर तो नहीं आ रहा था और पृथ्वी में भूकंप तो नहीं छा रहा था कि यह बजट प्रस्तुत कर दिया गया। यह बजट में ऑर्डिनेंस के माध्यम से महंगाई बढ़ा दी गई, भाड़ा बढ़ा दिया गया। महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस समय इस सदन की मर्यादा सत्ताधारी दलों के हाथों से नुकसान पहुंचाया जाएगा तो इस देश में लोकतंत्र को बड़ा खतरा पैदा होगा। हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम का एक दो उदाहरण रख करके मैं फिर रेलवे पर अपनी बात कहूंगा। महोदय, इंग्लैंड में डाल्टन वहां के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और वित्त मंत्री थे, वह बजट प्रस्तुत करने जा रहे थे। रास्ते में उनके एक मित्र ने पूछा कि बजट में क्या क्या है। उन्होंने संकेत दे दिया और जब बजट उन्होंने प्रस्तुत किया तो वो मेंबर जो सुना था वो खड़ा हुआ, कहा कि मंत्री महोदय, बजट की सैंक्टिटी खत्म हो गई, यह तो मार्केट में लीक आउट हो गया। डाल्टन ने कहा कि डाल्टन ऐसे मंत्री के रहते ये हो ही नहीं सकता है, लेकिन डाल्टन को उसी समय याद हुआ कि हमने बात कर लिया था, शायद उसी का उदाहरण दे रहे हैं। डाल्टन उठ खड़ा हुए और तत्काल कहा कि हियर आई टेंडर माय रेजिग्नेशन एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये मर्यादा चलाता है सदन। और दूसरा उदाहरण मैं देता हूं, परफ्यूमियो वहां के डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको रूसी गुप्तचर विभाग की महिला से एक संबंध की बात प्रकाश में आई। उन्होंने इसको डिनाई किया, उसके बाद प्रेस में उसका फोटो छपा, इसके बाद उनको स्वीकार करना पड़ा। नैतिकता का ऊंचा मापदंड क्या है? परफ्यूमियो की बात छोड़िए, मैकमिलन ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। यह संसद कुछ मूल्यों पर चलता है। और मैं एक बात दुस्साहस के साथ कहना चाहता हूं मंत्री महोदय, लगता है कुछ समय हो गया आपने स्वप्नदर्शी बजट दिया है और अभी तो आपके सदस्य कह रहे थे कि भारत का बजट है। मैं तो कह रहा हूं कि इंडिया का बजट है। टाइम ले लिया, क्योंकि कुछ बातों को लगता है कि रेलवे के विजन की बात, जब भी मापदंड होगा विजन को देखा जाता है कि इस बजट का विजन क्या है, मंत्री की दृष्टि क्या है, सरकार की सोच क्या है, सरकार भविष्य में कैसे संभालना चाहती है इस विभाग को। इसका एक आधार होता है। दूसरा आधार होता है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार की दृष्टि क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने क्या सोचा है, क्या विचार किया है, उसके पास क्या सूचना है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए सरकार ने क्या नीति, क्या कार्यक्रम
क्या अपनाया है, इसको देखने का काम कर रहे हैं। मैं विजन के विषय में तो कह सकता हूं, बड़े गर्व के साथ आप लोग कह रहे हैं कि 60,000 करोड़ रुपया और बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन चले, यह देश स्वागत कर रहा है। महोदय, स्वप्नदर्शी होना कोई गलत नहीं है। जो स्वप्नदर्शी नहीं होगा वह व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता है। जो स्वप्नदर्शी नहीं होगा वह क्रांति की बीज बो नहीं सकता है। यह सत्य है, लेकिन उसके भी कुछ ब्लूप्रिंट पहले से तैयार हो जाते हैं। तब वह स्वप्न आकार में हो जाता है। स्वप्न आप देख रहे हैं, स्वप्न देखने से आपको कैसे रोक सकता है। लेकिन जिस दिन चर्चा इस सदन में हो रही थी तो मुझको एक बात बहुत अच्छी लगी, गंगे नमामि, नमामि गंगे। और हमारे छोटे भाई और बनारस के छात्र नेता राज्य मंत्री के रूप में बैठे हुए, नमामि गंगे की जब बात कही गई तो हमको लगता है कि अपने सांस्कृतिक धरोहर को एक संभालने का नए ढंग से प्रयास चल रहा है। लेकिन मैं तो ये कहता हूं, उसके साथ एक और नमामि जोड़ देना चाहिए था, लौह पथगामिनी नमामि, नमामि नौ लौह पथगामिनी। अध्यक्ष महोदय, रेल का हिंदी रूपांतरण लौह पथगामिनी और मां गंगे का स्वभाव और रेल का नेचर दोनों मिलता जुलता है। गंगा राष्ट्रीय धरोहर है तो रेल भी राष्ट्रीय धरोहर, और इस राष्ट्रीय धरोहर को मैं इस रूप में कहता हूं कि गंगा स्नान करने से किसी को रोकती नहीं है। रेल जिसके पास भाड़ा की शक्ति हो उसको चढ़ने से नहीं रोकता। इसके साथ क्या किया गया है? कह देने से ये हो जाएगा कि हम हाई स्पीड ट्रेन ले चले जाएंगे। कह देने से होगा कि कर्नाटक से और बंबई से सूरत को हमने जोड़ दिया है। इसका भी तो ख्याल करना पड़ेगा कि बिहार कहां खड़ा है। इसका भी ख्याल करना पड़ेगा कि झारखंड इसमें कहां खड़ा है। इसका भी तो ख्याल करना पड़ेगा कि उड़ीसा का इंफ्रास्ट्रक्चर पर और क्या ध्यान दिया गया है। इसका भी तो ख्याल करना पड़ेगा कि असम से आगे अरुणाचल प्रदेश ऐसे स्थान के विषय में इसमें रेलवे में वह कहां खड़ा है। खाली ऐसे जगहों को रेल का विस्तार कर दिया जाए जहां को व्यवसायिक जिंदगी। मैं तो रेल बजट की तुलना महोदय करता हूं, इसके दो स्वरूप हैं। दिल्ली में दो दुनिया के लोग बसते हैं, एक कनॉट प्लेस में जिंदगी जीने वालों की जिंदगी होती है और दूसरा जमुना के पार की होती है। वशिष्ठ नारायण जी, आपका समय पूरा हो रहा है। तब तो महोदय मैं आपसे आग्रह करूंगा कि यदि मेरा समय खत्म हो गया, 2-4-5 मिनटों पर जिन बिंदुओं को मैंने उठाया था रेल मंत्री से, उसको मैं रख देता हूं। जैसे रेलवे के कुछ मंत्र होते हैं, महोदय आपका ध्यान में मैं इधर आकृष्ट करना चाहता हूं। आप भी कहीं कार्यालय के निरीक्षण में मंत्री बनने के बाद गए होंगे, तो निश्चित रूप से यदि डीआरएम का ऑफिस होगा और यदि उससे बड़े अधिकारी का ऑफिस होगा तो उसमें देखे होंगे लिखा रहता है जैसे बोर्ड पर सेफ्टी, सिक्योरिटी, पंक्चुअलिटी और क्लीननेस। मुझको लगता है सिक्योरिटी के ऊपर भी बहुत कुछ नहीं किया गया है। सेफ्टी फंड जरूर दिया गया है, क्लीननेस के ऊपर भी बहुत ध्यान नहीं दिया गया है, खान पान पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया है। तब रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया, रेलवे को आप सुधार लेंगे क्या? प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से रेलवे को सुधारेंगे क्या? रेलवे के लिए आपने भाड़ा के अलावा और यात्री भाड़ा के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं सोचा? क्या यह रेलवे ने पता लगाने का कोशिश नहीं किया है कि भाड़ा बढ़ाने के लिए और कौन रास्ते हो सकते हैं? क्या आपने रेलवे की परिसंपत्तियों को पता लगाने का काम किया है? क्या रेलवे के आमदनी के दूसरे स्रोत क्या हो सकते हैं, उसको पता लगाने का कोशिश किया गया? धन्यवाद, आपका समय पूरा हुआ। 2 मिनट और कहकर
आप पहले ही रेलवे एक ऐसा विभाग है, ज्यादा समय ले चुके हैं। 2-3 मिनट। रेलवे एक ऐसा विभाग है जिसमें खान पान का बहुत महत्व है। इस पर मैं कह सकता हूं 4-5 ठेकेदारों ने 200 से अधिक गाड़ियां अपने हाथ में ले ली। वो मोनोपोलिस्ट हाउसेज हैं। और बताइए, जिसने तो उसका करिश्मा आप देखेंगे। कहते हैं कि मैं गौड़ा साहब पता लगाने का कोशिश करिएगा। रेलवे ने निर्धारित किया है 15 रुपया रेल की नीर का दाम, और डेली जो नीर मिलता है वो कितना में मिलता है? वह 20 रुपया में मिलता है। कहां गई आपकी व्यवस्था? निर्धारित किया है रेट 15 रुपया, और उसी रेल विभाग ने यह किया है कि 20 रुपया डेली बिकता है। चूंकि बड़े पैमाने पर बड़े कंपनियां उनको 20 रुपया में बेचने के लिए रेल को देती हैं, वो 20 रुपया में बिकता है। महोदय, 50 रुपया खाना का लगता है, और पता लगा लेंगे मंत्री महोदय, मेल ट्रेन में 127 रुपया पर वही खाना एक आइटम मिला करके बेचा जाता है। रेलवे की यही स्थिति है। और दूसरी बात, टेंडर डॉक्यूमेंट होता है। टेंडर डॉक्यूमेंट इस ढंग से रेलवे में बनाया जाता है कि छोटे ठेकेदार या छोटे लोग रेलवे में इंटर कर ही नहीं सकते, चूंकि छा गए हैं रेलवे की व्यवस्था पर। हमारा जितने इफिशिएंट लोग हैं, और आंकड़ा यदि कहिएगा तो आपके रेल विभाग से आंकड़ा ले लीजिए। रेलवे ने कमीशन बहुत नियुक्त किया है। आखिरी बात करिए। आखिरी बात, सिक्योरिटी, जहां तक रेलवे एक्सीडेंट एक महत्वपूर्ण पार्ट है, और उस पर कह करके अपनी बात समाप्त करूंगा। रेलवे एक्सीडेंट के ऊपर रेलवे ने जो कमीशन बनाया, उसमें रिपोर्ट आया है कि लैक ऑफ बैरिकेटिंग, लैक ऑफ फेंसिंग, लैक ऑफ पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस, यही सबसे बड़ा कारण है ये रेलवे में दुर्घटना का। क्या इसके ऊपर कभी आपने सोचा है? और अंत में मैं धन्यवाद देते हुए अपने पार्टी के सदस्य कहकशा प्रवीण को धन्यवाद देता हूं, जो आज अपने मेडन स्पीच में, इनके लिए लगता है दूसरे धर्म स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन गया को अंतर्राष्ट्रीय जगह ये नहीं मानते, कुंवर सिंह को ये जगह को अंतर्राष्ट्रीय स्थान नहीं मानते। धन्यवाद। बुद्धा के, इसलिए मैं चाहता हूं गंगा पुल, जो दीघा पर गंगा पुल है और मुंगेर के गंगा पुल है, उस पर अधिक से अधिक पैसा देने का काम करें कि इसमें रेलवे का इन्वेस्टमेंट जरूर हो जाएगा। और साथ ही राज्य मंत्री जी, मैं आग्रह करूंगा, अब दर्शन सिंह जी को आने दीजिए। बहुत कम पैसा दिया गया है, बहुत कम पैसा दिया गया है, जिससे कंप्लीट हो जाए। कोशिश करिए, कर्नाटका ही नहीं, धन्यवाद उत्तर दर्शन सिंह जी यादव, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और ये भी बंगाल भी इसमें दिखाई पड़े, इतना सुझाव जरूर देंगे। धन्यवाद। दर्शन सिंह यादव। दर्शन सिंह जी। माननीय अध्यक्ष जी, क्या कितना समय है? समय कितना है? समय तो सीमित है आपके पास जी। समय तो पूरा आपके पूरे पहले वक्ता ले चुके हैं। अब आप अपने जो मुख्य बातें हैं, जो अनुभव की है, वो बता दीजिए। रेलवे बजट के बारे में मैं आपसे एक ही अनुरोध करना चाहता हूं, अपने दोनों मंत्रीगण से, आपके माध्यम से, कि ये बुलेट ट्रेन चलाई है आपने, चलाएंगे, धन्यवाद, लेकिन गरीबों का ध्यान रखा जाए। जो कोच चल रहे हैं वो अच्छी अच्छी गाड़ियों में या गिरे दर्जे की गाड़ियों में 2 जनरल कोच, 3 जनरल कोच लगे हुए। स्थिति ये है कि जनरल पैसेंजर उन पर लटकता चला जा रहा है पैरदान तक,
और तमाम तो दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिन दुर्घटनाओं का कहीं अता पता भी नहीं रहता। 5 मिनट है इनके पास। इसलिए जो लोग आरक्षित नहीं करा सकते हैं उनके लिए जनरल कोच बने। दूसरी बात अध्यक्ष जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि बाथरूम पर विशेष ध्यान दें। एक ट्रेन चलती है दिल्ली से लखनऊ के लिए, गोमती एक्सप्रेस। जिस समय वो गोमती एक्सप्रेस शुरू की गई थी उस समय आज की शताब्दी ट्रेन से किसी भी स्थिति में कम नहीं आंकी जाती थी, लेकिन आज उस गोमती एक्सप्रेस का ये हाल है कि उसके बाथरूम में जाने का साहस भी नहीं होता। यदि पानी लेते हैं नलों से हाथ धोने के लिए तो कब तक भींगी चली जाती है। इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि खान पान पर विशेष ध्यान दें। जो हमारे अभी सम्मानित वशिष्ठ नारायण सिंह जो कह रहे थे रेल नीर की, उसकी क्वालिटी पर ध्यान दें। आज जो मिनरल वाटर आ रहा है वो मिनरल वाटर को एसिड केमिकल डालकर पूरा कर देते हैं। यदि रेल नीर भी ऐसा होगा, बस अब थोड़ी देर जकिया साहब और बैठे रहते, जैसे ओके 2 मिनट जैसे तैसे और 2 मिनट खड़ा लीजिए। हुआ हूँ। और 2 मिनट लीजिए। तो ये रेल नीर चूंकि सरकार का है, रेलवे का है, नो। इसलिए मैं गौड़ा साहब से भी कहना चाहता हूँ उसकी क्वालिटी देख लीजिए। जहाँ वो बन रहा है वहाँ देखिए, चूंकि मिनरल वाटर को मैंने नजदीक से देखा है जाकर के फैक्ट्रियों में, उनमें बहुत केमिकल पड़ता है और उसी से किसी खान से चाहे बीमारी हो न हो, कैंसर, किडनी फेल इस पानी से जरूर होता है। इसलिए आप इसको विशेष ध्यान से देखें और खान पान को विशेष ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। Now, Sri Rita Brata Banerjee, maiden speech. My God. Then what do I do now? First of all, the point I want to make that Indian Railways is a public transport, and a public transport has to run with public characteristics. A public transport cannot run without public characteristics. And a public transport must have sustained budgetary allocation and support for its running. That has been the experience worldwide. Everywhere, public transport has been constantly had received support, budgetary support and allocations, and through it, the public transport has run. Now, this budget presented by Honorable Rail Minister Sadananda Gowda had made a paradigm shift. The paradigm shift is from the fundamental conception of Indian Railways as being a public transport. It has taken place precisely in this budget. Now, looking at railways, what Jairam Ramesh was telling here, that you look at railways as an essentially commercial entity, that is fundamentally wrong, and that has been precisely done in this budget. The budget, to be precise, sir, has been a classic exercise in a beauty parlor treatment.
It's a cosmetic exercise, high in rhetoric, low in substance. Emphasis has been on high-sounding bullet trains and commercial freight corridors with no budgetary calculations to back up the entire process. Minimum government and maximum government. Slogan-wise, it's brilliant. And it has kindled the imagination of many people in the country, I must admit. But unveiling of the slogan is basically taken place in this budget. The entire emphasis is to attract FDI and to undertake all further expansion and modernization through the public-private partnership route. Now, imposition of greater burdens on the common man has been done in this budget. Common man in our country, they need the railway the most, and they also use the railway the most. Already, undemocratic pre-budget hikes, Parliament was going to sit before that, rupees 8,000 crores has been ensured. The hike has been ensured. Now, you are linking the future prices of travel with fuel adjustment factor, which will further burden the people, and this cannot happen in a public transport. You are denying the fact that Indian Railway is a public transport. You have ensured basically a present continuous tense in the government's grammar. In the grammar of you which you have presented to the country, it is essentially neoliberal in its dictum. With every increase in prices, the prices of the railway fare will go up and there will be a continuous burden on the people. Now, you have presented the budget, sir. While presenting the budget, the 13 lakh employees, basically 16 lakh employees are there, but 3 lakh posts are vacant. So these 13 lakh employees who are working 24 hours for 365 days, braving the natural hardships, extreme conditions, even giving up their lives, they have been conveniently forgotten. Rail employees has a history of glorious struggles. In our country, rail employees have created glorious histories of struggle, and I firmly believe that the working people, the working class in the Indian Railways will fight this attempt of privatization, will fight this attempt of commercialization by tooth and nail. Now, sir, I just want to mention another point in this regard, that developing infrastructure, very important, developing infrastructure and filling up the necessary manpower was a dire necessity, but it has been conveniently sidelined. These 3 lakh vacant posts which are there, nothing has been said about them. You have made no attempts to fill up these posts. Now, employment could have been generated with this post. 3 lakh posts are not very less. And before announced, and mainly all these posts, these 3 lakh vacant posts, these are mainly associated with maintenance and safety. The question of safety have been dealt at length by many honorable members, because we have innumerable accidents, many people dying, innumerable accidents taking place, commissions are set up, but what is the outcome of the commissions, nobody knows. The credibility of the railway as far as safety is concerned, that has been very, there is a big question on that. Now, the question is that before announcing new trains, there are many existing trains. A time-bound mechanism, a time-bound action plan for ensuring the safety in the existing trains, that needs to be ensured. I was going through the railway papers. Honorable members from that side of the house, while speaking, they were mentioning to be different paper cuttings. Then in different paper cuttings, how the budget has been there, how the media had praised this budget. And I went on that, when I saw that the BJP leadership has said that this budget is a revolutionary budget. I also admit the budget is definitely revolutionary. It's a revolutionary budget as far as the corporates in our country are concerned, as far as the big industrialists are concerned, as far as the fat cats are concerned. They are very delighted with this budget, because the budget exactly what they wanted, the budget has gone on in that lines. Now, I just want to mention this point here, that what has been the experience of foreign direct investment? What has been the experience of PPP and in the other infrastructure sectors where it has been taken up? In airport sector, in sectors of seaports, the only thing that has been ensured that the cost of the consumer had grown manifolds. As far as the PPP is concerned, in this very budget, Honorable Rail Minister is here. Honorable Rail Minister in his budget speech, it is the budget speech of the Honorable Rail Minister which enlightened us. We came to know that as far as PPP is concerned, the budget categorically informed us that almost 60,000 crores through PPP has not been realized. So the budget basically presented by the Honorable Minister is a blueprint for privatization at the cost of the Indian people, who will go on to bear the brunt of profit maximization by the private sector and the FDI. Now, financial efficiency of the railway, sir, is dependent on the freight traffic.
Many honorable members have categorically said industrial development is also dependent on this development of the freight traffic, efficiency of the freight traffic. Over the years, Indian railways have been lagging behind in competition with the road traffic. Now, resource mobilization segments. There are resource mobilization segments in our railways. And as I mentioned in the beginning, that it's a public transport with a public characteristics. And in this public transport, the resource mobilization segments like port connectivity, mining connectivity, power plants connectivity, these are now being eyed by the PPP and the FDI at the stewardship of the new government, because ensured commercial returns are there. And if these sectors, in these sectors, when this commercial, where the commercial returns are there, when blood will be soaked from this sector, the entire body will be bloodless, and that will be a detrimental situation for the Indian railways. Once this sector goes in the hands of the private players, goes in private hands, things will become more untenable for the government. Now, consolidation and expansion has to be the slogan, but unfortunately, this slogan has been forgotten. Plan expenditure, as far as this rail budget is concerned, is almost negligible. Honorable Mukhtar Abbas Naqvi is not there, not here. Here I was reading, I also saw in a TV, that he said that it's a revolutionary bullet budget. This revolutionary bullet budget, through this revolutionary bullet budget, journey of railways has begun on a world-class track. Now, Jairamji is also not here. He was speaking precisely in this point. He mentioned about, yes, we travel in Indian railways, the Rajdhani, the Shatabdi, having a maximum speed of 130, 135 kilometers per hour. You are speaking of a bullet train, minimum speed needs to be 299 kilometers per hour. The existing track, I will come into that. What has been the condition of the tracks? What has been the condition of the tracks? So when you speak about these international standards, and many honorable members have spoken that 60,000 crores will be the minimum cost running from Mumbai to Ahmedabad or vice versa. So basically this 500 kilometer run, 1 kilometer will be approximately 120 crore. Now resource for this construction will come from where? The rail budget is completely silent on that. Will it come through FDI? Will it come through public-private partnership? Where is the concern for concrete plan for generating funds? The question of the land is also there. If you want to have this track, the question of taking lands will be there. That question is also not dealt with. It's basically an unrealistic dream. The bullet train project, ये तड़पता हुआ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये चमकता हुआ हिंदुस्तान के लिए है। एक हिंदुस्तान के अंदर दो हिंदुस्तान का जो पैदाइश इतने वर्ष शासक वर्ग का नीतियों का वजह से हुआ है, ये बजट में बुलेट ट्रेन का जिक्र करके रेल मिनिस्टर चमकता हुआ हिंदुस्तान को बढ़ोतरी दिए है। इसीलिए ये रेवोल्यूशनरी बजट है, इन लोगों के लिए इनका प्रेज हो रहा है। तो मैं ये बात बोलना चाहता हूं, चाइना का बात आया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये तो सही है, 1947 में हम पॉलिटिकली आजाद हुए, चाइना में 1949 में क्रांति हुआ, तो 2 साल बाद जिस देश में क्रांति हुआ वो कहां तक पहुंचे हैं वो अलग बात है। मगर जहां तक रेलवे का सवाल है, पीपल वर स्पीकिंग अबाउट चाइना, आई जस्ट वांट टू मेंशन, बिकॉज आई वाज मेंशनिंग अबाउट द फ्रेट ट्रैफिक, देन इन चाइना the freight traffic yearly outlay is 116 billion, sir, and ours is roughly 10 to 12 billion. And the question of public transport once again comes into fray. The entire Chinese model, entire railways in China is conducted through the China Railway Corporation, which is a national railway operator of the People's Republic of China under the Ministry of Transport. Nothing public is there. It's controlled by the state, because rail throughout the world is a public transport and public characteristic needs to be maintained. Now, as far as the question of Northeast is concerned, Northeast question is a very important question. In spite of resources, huge resources, desired development has not taken place in the Northeast, and these are also the reasons of insurgencies there. Now, as far as Tripura is concerned, it's unfortunate that Agartala to Shabrum, a state covered on 3 sides by Bangladesh. One side Assam is there, connectivity with Silchar is there. This from Kumarghat to Shabrum through Agartala. It's a long demand of the small state, of the people of the small state of Tripura. It has almost conveniently been forgotten. No money, almost negligible money has been there. And the most important thing, the Akhaura via Bangladesh Chittagong route, that was a very important project, because it is not only important for Tripura, it's also important for the entire eastern sector. In that, and single money, single paisa has not been ensured. Now, as far as the metro rail in my state is concerned, I come from West Bengal. बंगाल में मेट्रो रेल के जहां तक सवाल है, हम लोग ये मानते हैं कि मेट्रो रेल में जो पैसा का
दिया गया है वो पैसा ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, नहीं देने का बराबर है. तो आई विल अर्ज द ऑनरेबल रेल मिनिस्टर दैट ही मस्ट मेक अ पर्सनल विजिट. आई विल अर्ज अपॉन हिम दैट लेट हिम गो टू Calcutta, see the entire thing and let think over, because this metro railway, the oldest in our country, almost the money given is almost negligible, almost no money has been given. Now the point is that, sir, when I was going through different budget speeches, I'm a new member, I will not say that I went through all the budget speeches, but definitely from 2009-10, all the budget speeches I was reading. In the 2009-10 budget speech, the budget speech told me that in the budget it was said, emphatically declared that within the next economic year, 1,000-kilometer tracks will be laid, and within 2020, 25,000 kilometer will be laid. Now, unfortunately, when I was looking at different data and questions, which also me and other members made, the answer came from the ministry that within 1 year only 100 kilometer was laid. Now, in the 2010-11 budget, I was looking at the budget speech, sir. I saw in the budget speech, it has been said that 522 hospitals and diagnostic centers, 50 central schools, 10 residential schools in the style of Navodaya Vidyalayas will be constructed. The railway department will be doing that. 30 multi-speciality hospitals and 16 factories in my state. People may call me partisan, but I will be very grateful to the Honorable Rail Minister when he will be replying. What is the status of these factories? Because as my personal experience goes, in many of the factories, it was mentioned in successive rail budget, Shalimar Auto Hub, Kishan Vision project in Singur, Metro coach factory in Noapara, rail coach factory at Kachrapara, Rail Axle factory at New Jalpaiguri, Jellingham and Holdia factories, then rail wagon factory in Kulti, coach factory and power plant in Purulia, factories at Adda, Tindharia and Bajbaj and Coach Bihar. Some money has been allotted to some places, but my personal experience is many of these factories are basically a lucrative ground for cattle grazing Only centers. 2 more Sir, minutes. just give me 2 minutes. Only Other two- people two were more making maiden speech to. Yeah, that's why 2 more minutes. I will conclude, sir. 2 more minutes. I will. 2 more minutes. Boliye, 2 more minutes. Please So speak. what I want to mention, sir, that I just want to know what has been the status, because as my personal experience goes, I have been moving around the state. Many of these proposed factories are lucrative and fertile grounds, cattle grazing centers. Cattle in large number are going there. People are taking cattle, and for long we have heard that 16 factories has been established in our state. Factories, I am unable to see, I may be partisan, but I can't see people going to the factories, smoke coming out of the factory chimneys, production is made, unable to see. So the question of mindless populism, and then I go into the 2012 rail budget, sir, I saw in that rail budget speech, the rail minister saying that the rail has gone into ICU. I was amazed, 2009, 10, 10, 11, 11, 12, rail budget must have a continuity because people from the same group were placing the budget, but unfortunately did not happen. I am No, please just making my last point. Sir, our land happens to be the land of maverick celluloid geniuses like Ritwik Ghatak, people like Satyajit Roy, people like Mrinal Sen. Satyajit Roy in his celebrated Pather Pachali, there is a famous scene, many of people have seen, that a little girl with her young brother is running through the fields for long, because at that time train will come. She is running to the train. The joy, the exuberance that through the black and white came up, through the brilliance of Roy, that was the dream of the Indian people, because Indian Railways, ye jo itna bada desh hai, yes, doctor, from this side of the bench you have heard for the last 10 years that Indian people must tighten their belts, tightening of the belts. This has been said that Indian people must tighten their belts. Now, Yes. see, sir, 1 minute, just 1 minute. That now we are hearing that everything is empty, so more stringent measures for restoration of financial disciplines, more little dose of the same medicine. Now, I have heard, sir, I am learning because I am a new member, I want to learn. I have heard it, it fascinated me. That in Yes. victory one must be generous, sir. I have heard it. This is, the people of India have voted decisively for the BJP. I just want to ask, ये जो 2 हिंदुस्तान है, एक हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी का जो चिराग है, ये चिराग लोग भारी तादाद में बहुमत दिए हैं. BJP had kindled the imagination of the common man. now- People have voted, sir, one point. Please. People have voted for them. तो ये जो चिराग है, in a democracy you cannot take people for granted. Okay. In a democracy people Now. cannot be taken Okay, for please. granted. ये आम आदमी के Yes. खिलाफ, सर 1 minute, one जंग का जो ऐलान किया गया है,
मैं ये बीजेपी से उस साइड से ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये चिराग जो लोगों के हाथ में है, आपका चिराग, लोग ये चिराग को बरकरार रखना चाहते हैं, मगर लोगों को ग्रांटेड मत लीजिए, क्योंकि चिरागों का हिफाजत करते करते हवा का रुख बदलता नजर आता है। तू कितना आग बरसाएगा सूरज, हमने तो तुझसे शोले पे चलना सीख लिया श्रीमती है। गुंडू Thank you, सुधारानी, sir. श्रीमती गुंडू सुधारानी। Thank you, Chairman, sir. Sir, at the outset, I take this opportunity to congratulate the Honorable Railway Minister for presenting the maiden budget of the NDA. The budget indicates a paradigm shift in the history of the railways. Proposals for safer and faster journeys raise new hope. रेलवे में यात्री के दौरान सफाई के लिए जो कदम उठाया गया है, उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि यात्री ज़्यादा आरामदायक यात्रा कर सकेंगे. The move to upgrade the reservation system definitely deserve applause. Now we can reserve 7,200 tickets per minute from existing 2,000 and odd tickets. It is a welcome move, sir. Sir, I welcome that at last the railway shown some generosity towards women. I wholeheartedly welcome for appointing 4,000 women RPF constables for protection of women. I request the Honorable Minister to provide them mobiles so that they can contact the concerned officials to address problems quickly. The Minister said that he requests rupees 5 lakh crores to complete all the projects. I don't know what the UPA has done all these years. The Minister himself has indicated that during the last 10 years, rupees 60,000 crores was spent on 100 projects. So I request to complete all the projects in a time-bound period, sir. Secondly, with FDA and PPP, I am confident that backlog projects can be cleared quickly and early. Sir, we have been making up-team requests for taking up various projects which are pending for years in AP and Telangana. Without debating all the issues, I wish to mention some of the important projects that are languishing for approval, sanctions and allocations. In Telangana region, there is a long pending demand in Telangana for making Kajipet as a separate division. You may be aware that Kajipet is famous for being major railway junction and locomotive maintenance division in Telangana. With more 100 years of history, Kajipet is hub connecting north, south, east and west India with numerous trains passing through the station. It is one of the busiest South Central Railway. If you look at its present position, not only the station but also local shed and other things are pathetic and situation is going from bad to worse. We have been demanding inside and outside the parliament, urging the successive railway ministers to consider various proposals relating to Kajipet that are pending the Ministry of Consideration and Implementation. Sir, but nothing tangible been done so far. The minister announced for setting up Railway University. I request that Telangana is a suitable place and the university can be set up in Hyderabad as it has got all the necessary paraphernalia. I am mentioning some of the important proposals for consideration of the Honorable Minister and request him to make them up and complete in a time-bound manner. The following trains to be announced: Hussain Sagar Express from Secunderabad to Mumbai, Rajkot Express from Hyderabad to Surat, starting point at Kajipet, new train from Kajipet to Bangalore, new express train from Kachipagуда to Bangalore, Bombay Express from Hyderabad to Mumbai, starting point at Kajipet. Increase the frequency of EMUs between Warangal and Secunderabad. Introduce electrical multiple use trains between Warangal and Kagaznagar. Padmavati Express should be run whole the week and one first class AC coach should be provided because it is going to Tirumala. Most of the people from Telangana will go to pray the God for Tirumala. People of this region has been demanding for trains for Kajipet to Shirdi, Nagpur, Tirupati. So this request may be exceeded too. There is also need to additional trains between Kajipet and Balasha. Ladies compartment should be added to the trains that are passing through Warangal. Electrical multiple use trains between Warangal and Kagaznagar to be introduced, sir.
There is a land in Bodagutta. I request to hand over it and set up for pit lines. This land is sufficient to set up 3 to 4 pit lines. Strengthen the sideline facility for transportation of agricultural goods. Sufficient rakes have to be provided for transportation of agriculture products like rice and also coal, fertilizers, and priority should be taken to these things for transportation. Sir, railway underbridge, in and out bridge in like Secunderabad from Warangal to Shivanagar has to be taken, sir. Sir, there is no line from Warangal station, Ganpur, Palkurti and to Nalgonda. I request to announce the small line budget in this, sir. And also one footover bridge from Warangal to Shivanagar. And also there is a demand for RUB in Chintal. And these are all only the small works to be done, sir. And since the Kajipet junction has diesel and electro local shed, the apprentice center be opened here so that it will help who are residing in all around the Kajipet. And also wagon factory was announced in 2010-11 budget. Nothing has been done because of I think land has not been given by the government. I request you to kindly pursue the state government by taking it as a personal view of the importance and long pending demand and allocate sufficient funds this year to commence the work immediately. It is very important, the project, as it only provides employment to thousands of people in Telangana, which is backward region, but also helps railways to utilize infrastructure available here, sir. Sir, survey for railway line between Bhupalpalli, Karimnagar, Uppal is over and require funds for starting the work. I request to kindly allocate necessary funds and complete this project in time-bound manner, sir. And last request, I request my upgradation of Warangal railway station. Please conclude. And also the railway polyclinic at Kajipet has been upgraded to sub-divisional hospital last year. There is neither lab nor operation theatre and the railways is setting less number of beds to provide these facilities. Secondly, there are 14 doctors, but no reason the best known to railways is not operating, only 3 regular and 1 contracts to follow up this, sir. I am requesting this. And also for lab facilities and all with these words, I conclude my speech and with a request to Honorable Minister to pay special interest on Telangana and as well as Andhra Pradesh, sir. Thank you, sir. Thank you very much for adhering to the time. Thank you. Now, before I proceed, I have to share with the House my problem in time management, because the position is like this. In the others category, there are 10 speakers. Total time is only 40 minutes. If I divide, it's only 4 minutes. But 4 minutes, nobody can complete the speech, so they need little more time. With regard to Congress, there are 8 more speakers. 8 more speakers, and they have 85 minutes. And BJP has 4 minutes. No, let me complete. Sit down. That's what I am saying. Sit down. No, let me complete. See, Congress has got 8 more speakers and they have got 85 minutes. BJP has got 4 more speakers and 39 minutes. Therefore, for time management, I would request Congress members and BJP members to finish to limit their speeches to 8 minutes. 8 minutes. Now, so that, please, I am only requesting, you may or may not do. I am only saying, because 8 p.m. we have to conclude. So many speakers are there. Others category, they are 10. They have to, see, in 4 minutes they cannot complete. If I divide time, it's only 4 minutes. So today I am sharing with you my problem. So my request to the Congress and BJP members, limit your speech in 8 minutes so that the others category can speak 5-6 minutes at least. So that is all what I am saying. With this request, I am, then I want the sense of the, if the House agree, because I know it is a budget in between, there should not be any pay, but Sri Harshavardhan is waiting from 12 onwards, just for laying a table. If the House agree, I will allow him. Okay, you can lay it on the table. You can lay it on the table. Sir, I wish to lay on the table of the House a statement regarding Doctor Pathological Laboratory Diagnostic Centers collusion defrauding the patient consumer as revealed through sting operation titled Operation Jonk
aired by News Nation TV channel on July 21, Okay, thank you. 2014, sir. Thank you. Now, Sri D. Raja. A copy will be supplied. Sri D. Raja. D. Raja. Sir, thank you, sir. Railways are the biggest public transport available to the people of our country, sir. In a way, railway holds the country together, linking all regions. And I wish the railway ministry takes efforts to strengthen I can. Your name and is there, improve then the railways Naam bhi? in the interest of the nation as a whole. But Sir, my good friend what are you going to go? Jairam Ramesh has raised a fundamental question call you next. whether we need a separate budget for railways. There is a demand for separate budget for agriculture. So it is an entirely a different issue. Some point of time the parliament can spend some time to debate on that. But now we have a railway ministry and separate budget for railway ministry. Sir, the railway budget talks a lot about private investment. But the minister is vague and not very clear how the private investment is going to be and will play a role in strengthening our railways. Then there is cure all mantra, that is FDI in railways. And we have a position, FDI in defense, FDI in insurance, FDI in retail trade and all such things. But FDI in railways, again the minister seems to be silent and not very clear how this FDI is going to help Indian railways. Sir, again I quote my friend Jairam Ramesh. He talked about the bio-toilets. Sir, even today we have the manual scavenging, and railway is the biggest employer of manual scavengers. Manual scavenging is a national shame, and railway must take it up as an opportunity to get rid of this national shame. So railway should go for the bio-toilets, the coaches with bio-toilets, sir. Then, sir, I would like to add one more thing for the consideration of the minister. There is no mention about coaches meant for disabled persons. Now I think every train should have separate coaches meant for disabled persons. And it is another thing, the RPIF and security forces should see that coaches meant for disabled persons should not be occupied by others. It is for security forces to ensure that. But I also I also tell the minister to take note, there must be some effort to help the disabled women passengers. Their plight is very miserable. This the ministry can take into consideration. Sir, now we talk of modernizing our coaches and improving our railways. We have one integral coach factory in Chennai, and I do not know what is the perspective of the ministry to improve, enhance the capacity of integral coach factory at Chennai, and because it is one of the globally acclaimed factories, factory, I suppose, and the railway ministry should know that. There, I think the ICF needs more attention from the ministry. Then there are some railway issues, sir, connected to Tamil Nadu also. Even my good friend Maitrayan was talking about one region, how to connect Kumbakonam and other things. But there is an issue that Thiruvarur to Tiruthurai to Karaikudi, the gauge conversion has been accepted, and I don't think the work is in a progress because of various reasons.
particularly the budgetary support to that. And I think I met the Honorable Minister, I made a representation. I think he gives due consideration to this line. Then finally, sir, I don't want to take much of the time. This passenger fare and freight charges now are linked with the hike in the prices of fuel. During a question hour, I raised this issue. What is the criteria or what is the formula that ministry follows to do this? Because it is not a good practice to hike the passenger fare or freight charges as a pre-budget exercise. It comes as a big shock or big blow to the passengers, because when we are going to discuss budget, why should the ministry go for a pre-budget hike in the passenger fare? And what is the criteria to link it with the hike in the price of fuel? And how are you going to adjust? This is one issue the ministry needs to explain, the minister needs to explain. So, sir, the railways should have, I am not going to talk about the bullet train. Many speakers have touched it. For one bullet train from Ahmedabad to Mumbai to Ahmedabad, you need 60,000 crores. What about you are socialist? You are socialist. Why do you want bullet train? No. The minister wants bullet train. I am arguing for common people. Oh, I see. I am arguing for common people. For one bullet train, the government wants to spend 60,000 crores. And I am talking about other areas because there are regions which need to be connected by railways. There are regions where you need doubling of tracks. There are regions where you will have to go for gauge conversion. There are regions, even in Kerala, people say all coaches are old coaches in Kerala, sir. You are from Kerala, you know the experience, and even rats can bite you next time when you travel. What I am trying to say, there are complaints from different states. The railway ministry or railway budget doesn't address the demands of those regions. It is a national budget, and there should be a national perspective, and it should be an all India budget. So the ministry must, or the minister, people say the minister with a good smile. I wish he continues to have that good smile all the time in the coming days. But he must address all these issues raised by all members. Thank you, sir. Now, Sri Muhammad Adib, he has to go for breaking the fast. So please. Take only 5 minutes. Take only 5 minutes. ओके, 5 minutes. ये एक दस्तूर है कि जब कोई बिल या बजट आता है तो उसकी पार्टी के लोग उसके कसीदे पढ़ते हैं. अपोजिशन चाहे उसी का बजट हो, नाम बदल के आया हो, फिर भी वो ऐप ढूंढते हैं. मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ. मेरे लिए कुछ चिंता के विषय हैं इस बजट में, मंत्री जी के सामने मैं रखना चाहता हूँ. 2006 और 8 में रेलवे के पास 11,500 करोड़ सरप्लस था. आज 2014 में 600 करोड़ रुपया सरप्लस रह गया. फिर भी बड़े बड़े वादे किए गए. मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि होगा क्या. ये सबको पता है, एक ट्रेन जब चलती है तो 5 करोड़ का खर्च आता है उसमें, और उसका रेवेन्यू 2.2 करोड़ से 2.5 करोड़ होता है. ये सबको मालूम है. जब ये शक्ल पैदा होती है तो रेवेन्यू आता कहाँ से? आता है मालगाड़ी से, जहाँ एक ट्रेन जब चलती है 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, 10 से 12 करोड़ की उसकी इनकम होती है. कोशिश होनी चाहिए थी कि वहाँ इस पे कोई थीसिस या कोई प्रोजेक्शंस होते. मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऐसी कोई बात की गई है. 676 प्रोजेक्ट्स जो आज पेंडिंग हैं, उसमें से लगभग 350 के करीब कंप्लीशन के करीब हैं या ख़त्म होने वाले हैं. लेकिन लगभग 300 प्रोजेक्ट अभी बाकी हैं. इनको पूरा करने के लिए
50,000 करोड़ पर ईयर 10 साल तक रेलवे को चाहिए। ये कहाँ से आएगा? इस पे खामोशी है, बिल्कुल होश और खामोशी है। आज ये कहा जा रहा है कि हम पैसे लाएंगे, ब्लड ट्रेन चलाएंगे। मैंने ये समझ नहीं पाया। मैं खुश होता अगर ये इस बजट में कहा जाता कि ट्रेन को बिल्कुल सही वक्त पे चलाया जाएगा, जो ट्रेनें चल रही हैं उसकी हिफाजत की जाएगी। पटरियों का हाल ये है कि कितनी रिपोर्टें आ चुकी हैं, रेल में मौजूद हैं। मैंने कई साल पहले पढ़ा था कि रेल की जो ट्रैक्स हैं वो मखदूश हैं, ख़तरनाक हैं, बहुत फास्ट ट्रेन चलाने के लिए ख़तरनाक हैं। आप जानों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। मुझे अच्छा लगा था जिस वक्त रेलवे के मंत्री ने ये कहा था कि हम कुछ पैसे बढ़ाएंगे। ज़रूरी था, ये सबको मालूम है, इधर वालों को भी और इधर वालों को भी, कि रेल बुरी हालत में है, उसमें पैसे बढ़ने चाहिए थे। दुख हुआ जिस दिन रेलवे ने अपने पैसे वापस ले लिए। समझ में आ गया कि इनकी नीयत भी रेल को सही करने की नहीं है, पॉपुलर बजट लाने की है। ये गलत तरीका है, ये गलत तरीका है। अगर रेल का कॉन्सेप्ट जिसने गरीबों को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ा था, आपको कहना चाहिए था कि हर फास्ट ट्रेन में कम से कम 4 डिब्बे ऐसे होंगे उन गरीबों के लिए, वो गरीब सफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, अपनी पेट की आग को बुझाने के लिए, रोज़ी के लिए। उनके डिब्बों में तो जाके देखिए, जानवर भी ऐसे नहीं जाता जैसे इंसान जाता है। आप कहते हैं हम वाईफाई लगा देंगे, किसके लिए? अरे वो तो हवाई जहाज़ से भी चल सकते हैं, वो एसी फर्स्ट क्लास में भी चलते हैं। सारी मराहत, सारी बेनिफिट्स आप उनको देने के लिए तैयार हैं। 80% लोग जो मजबूरी में सफ़र करते हैं, जो बग़ैर रिजर्वेशन के सफ़र करते हैं, उनके लिए कुछ आपको लाना चाहिए था। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अब ये सब तमाशे छोड़ दीजिए, मत करिए ऐसा, करिए उनके लिए जिन्होंने आपको वोट दिया है, वो हैं गरीब लोग। जो यहाँ जिता के लाते हैं वो कोठी वाले लोग नहीं होते, वो गरीब लोग होते हैं। उसके लिए आपके इस बजट में क्या है मुझे नहीं मालूम। कहा गया कि हम पीपीपी लाएंगे, इसके ऊपर पैसे जनरेट करेंगे। कौन लोग लाएंगे? ये वही लोग होंगे, वही महाजन जिन्होंने आपको फंड दिया था। अब ये असूद के साथ उसमें पैसा लगाकर रेल के और दूसरी चीज़ों में आपसे कमाएंगे। किन के लिए कह रहे हैं? आप कह रहे हैं एफडीआई को हम के थ्रू पैसा जमा करेंगे। क्यों चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने आपको या इनको या हमको पार्लियामेंट भेजा अपनी दौलत का सहारा लेकर? आप उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए मौके दे रहे हैं। आप चाहते हैं कि हम उनके लिए एक ख्वाब बना दें, एक दुनिया बना दें। आपका काम यह था कि हिंदुस्तान जो जुड़ा हुआ है वो रेल के जरिए जुड़ा था। इसके अंदर आपको गरीबों के लिए काम करना चाहिए था। ट्रेन की टाइमिंग का हालत यह है कि छोटे शहरों में मिनिस्टर साहब जब हम जाते हैं तो सबसे पहले 10 बार फोन करते हैं कि मालूम करो ट्रेन कितनी देर में आ रही है, क्योंकि वहां पर आज मुश्किल ये है कि टेलीफोन भी कोई नहीं उठाता। आप स्टेशन पहुंच जाइए, 1 घंटा लेट आ गई, 2 घंटे लेट आ गई। अगर वो टाइमिंग आप सही कर दें तो वो आवाम का बजट होगा। मैं इन अल्फाज के साथ आपको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन कहता हूं ये हवाई बातें, ये ब्लड ट्रेन, ये फास्ट ट्रेन छोड़कर गरीबों के लिए अगर कुछ करिएगा तो यकीनी तौर पर हम कहेंगे कि एक अच्छा बजट आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।